आर फाइन और आप लोग सब तैयारी कर रहे हो आने की. So in a day or two we will be face to face with each other, right? So let's hope everything goes fine. Face to face, but obviously with mask on. ठीक है, इसके बगैर face to face नहीं होना, right? So this will be our last online lecture. उसके बाद आप लोगों के लिए हमने कुछ काफ़ी एक्सटेंसिव एक क्रैश प्रोग्राम you through all those things जो कि आप नहीं कर सके हो और कोशिश करेंगे आपको विद इन अ मंथ और सो आपको उस क्रैश प्रोग्राम में से गुजारें और आपको वो चीज़ें सिखाएं. So let's see how it goes. So today last time हमने optic nerve disorders को पढ़ा था. This time we will talk about the cranial nerve palsies, right? एक मिस्टेक हो गया. इसको दोबारा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा. Okay, fine. So cranial nerve palsies, the eyes, they are related with so many cranial nerves. Most important is the sensory nerve जिससे हम देखते हैं, that is the optic nerve. उसके अलावा there are so many nerves which are involved with the ocular movements. जिसमें obviously oculomotor nerve है, उसमें आपकी and there is the sixth nerve. Or fifth nerve that is involved for the sensory sensations, sensory supply to the eye as well as the surrounding areas. So, जो important nerve है, which is of concern today, that is the third nerve, right? So it is a common thing to get a third nerve paralysis. But उसके reasons, to know the reasons why, it is very, very important to know the anatomy of the third cranial, right? So ये आप लोग ही नहीं है cranial nerve, ठीक है? ये जो आपके सामने इस वक्त एक diagram सी है, you people all know about it. So this is just a section of the midbrain at the superior cortex. So you can see that there is these two are the red nuclei, right? So this is basically the circle of Willis, right? So these two arteries, they are the this bigger one is the posterior cerebral artery, and this smaller one is the superior cerebellar artery. ये आपके cerebral peduncles हैं, ठीक? और यहाँ पे ही आपके इस थर्ड cranial nerve के nuclei पड़े होते हैं, ठीक है? Here they are, right? So this cranial nerve arises from the midbrain, and it goes between these two arteries, and then lies very near to this posterior communicating arm, and then it enters into the cavernous sinus, and then it enters into the orbit. So ये जो इसकी anatomy है, that is very, very important, because यहीं पे इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इसकी paralysis.
So this is just to show you this nuclear third nerve nuclear complex इसको कहते हैं. इसमें आपने आपने पढ़ा हो शायद कि एक ही उसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसा नहीं होता. There are separate subnuclei for each muscle this nerve is supplying. So this inferior rectus कहलाता muscle है, inferior superior rectus कहलाता है, right? इसी तरह superior oblique का ये पड़ा हुआ है, which is obviously supplied by the fourth, and lateral rectus का ये पड़ा है, which is supplied by the sorry. So there are separate nuclei for each muscle. This uh, this nerve is supplying. So separate nucleus for each muscle. So supply किस किस को करती है? You all know that. ठीक है? It supplies the levator palpebral superioris. Function of the levator palpebral superioris, it elevates that. When the third nerve gets paralyzed, what you will get? You will get ptosis, and there will be profound ptosis. अब बिल्कुल आँख जो है यूं करके लटक जाएगी, ठीक है? So there will be profound ptosis due to levator paralysis. Almost all of the eye covered by the lobe. There will be diplopia. Obviously, जब आपके extraocular muscles they get paralyzed और दूसरी आंखें बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, so there will be no coordination between the two eyes, double vision. But luckily, it is for the patient it becomes a blessing in disguise, because this diplopia is very annoying for them. Due to that ptosis which is covering the pupillary area, so वो अगर उसको lift करेगा ऐसे lid को, तो then he or she will be able to experience. So that diplopia is usually masked by that ptosis. Patient will be having exotropia. क्यों होगा exotropia? क्योंकि lateral rectus is supplied by sixth nerve, which is uninvolved, and जो आपकी है medial rectus, that is involved. So जो lateral rectus है उसको outward खींच लेगा, ठीक है? So the eye will be pulled towards the outer side, towards the temporal side, and that is known as the exotropia. Patient will experience a squint, okay? That is the paralytic squint, and the eye will be deviated towards the outer side, which is known as the exotropia, and that is due to the unopposed action of the lateral. और सुपीरियर ओब्लीक मसल जो है, विच इज उसका जो मेन फंक्शन है, दैट यू ऑल पीपल नो, दैट इज द इंटॉर्शन. सो वो एक तो आई जो है वो एक्सटॉर्ट हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि इंटॉर्शन नहीं हो रही, ठीक है, ड्यू टू द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द सुपीरियर ओब्लीक, क्योंकि इंफीरियर ओब्लीक जो है वो उसको काउंटर करता है, और I will be slightly intorted, थोड़ी सी, क्योंकि इस superior oblique का function, not a major function, but its secondary function is to depress it. तो है वो superior oblique क्या करेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा. There will be slight hypotropia, not hypotropia. So I will be pulled downwards slightly. So there will be limited adduction, there will be normal abduction, limited elevation due to inferior oblique and superior rectus paralysis, and limited depression due to inferior rectus paralysis. So slide C, eye नीचे की तरफ जाएगी due to the intactness of the superior oblique muscle, but eye in अगर आप उसको एग्जाम करेंगे उसकी मोटिलिटी, तो वो नीचे नहीं जाए, बिकॉज मेजर डिप्रेसर जो आई का है, दैट इज द इंफीरियर रेक्टस मसल जो है वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है.
So almost all the movements they will be disturbed except the abduction, which is the function of the lateral rectus. इसके अलावा जो आपकी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई है to hear me again. There was some problem with my internet connection. Please start again. एक मेरी बेगम साहब ले रही हैं ठीक है. So anyway, supply. So as the oculomotor nerve also supplies the parasympathetic muscles, the sphincter pupillae and the ciliary muscles of the eyeball. So that may result in dilated pupil as well as defective accommodation and both indirect and consensual light reflexes without constriction in the affected eye. Okay. So sudden complete oculomotor palsy, loss of motor and parasympathetic function is a sign of potentially life-threatening disorder. I will come to this thing. This is a very, very important thing which you people must. अगर आप ये चीज ही आज की समझ लें तो मेरा मतलब आज की इस क्लास का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा. I will come to it. अभी थोड़ी देर में मैं इसकी तरफ आता हूँ. So in unconscious patients, unilateral midriasis is often the only clinical sign of this. ठीक है, आप मोटिलिटी तो उसकी जब आपको उसकी उस आंख में यूनिलैटरल मिडरिएसिस मिलेगी तो दैट मस्ट पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग. मैं उसकी तरफ आता हूँ. So this is just to show you कि इसमें होता क्या है. Nobody loves you when you are down and out. Obviously patient को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा. There is ptosis, pupil बड़ा होगा, eye will be deviated towards the outer side और थोड़ी सी वो नीचे की तरफ गई होगी. Down and out, pupil will be dilated. It will be non-reacting. ठीक है, same thing again, right?
तो इस चीज के ऊपर इस पिक्चर को आप ज़हन में बिठा लें, ठीक है। Third nerve palsy, you will be having ptosis, you will be having dilated pupil on that side, the eye will be towards the outer side and towards the downside. It will be exotropic, it will be hypotropic, right? There will be no light reflex in this particular eye. Both the light reflex, direct as well as the consensual in this particular eye will be absent, right? And the accommodation will also be get disturbed. So ये आप देखें कितनी profound ptosis है इस patient में. So you have to lift this eyelid to see whether the eye is deviated outwards and slightly downwards, right? So this is a typical picture of a third cranial nerve palsy, right? This is a typical picture of the cranial nerve palsy. Again, same thing again. So I will come to this thing. The causes जो है of third cranial nerve palsy, it may be idiopathic, but most common cause of third cranial nerve palsy is usually vascular in origin, right? Hypertension and diabetes. These are known as the ischemic cause of third cranial nerve palsy, and these are the two diseases which cause hypertension and the diabetes. So vascular causes, they are the most important. ठीक है, बाकी जो causes हैं they are rare, but they are usually life threatening. वो rare हैं लेकिन life threatening हैं, like aneurysm within the brain. मैंने आपको उसकी anatomy बताई थी जिसमें it was lying very near to those arteries जिनके aneurysms इसको affect कर सकते हैं. इसके अलावा trauma है, tumor है, and then there are certain diseases like syphilis, giant cell arteritis, collagen vascular disorders. They all can cause, but they are very rare causes of third cranial nerve palsy, right? The most common one is the ischemic cranial nerve palsy, ischemic third nerve palsy. That is the vascular causes due to hypertension and diabetes. ये जो पिक्चर है इसको अपने ज़हन में थोड़ी सी रखिए. ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस क्लास में, ठीक है. वो ये है कि अगर आप इसको गौर से देखें, ये थर्ड नर्व जा रही है आपकी, ठीक है. ये इसका मेन बल्क ऑफ फाइबर्स है जो कि सेंट्रल फाइबर्स हैं, ठीक है. इनको ये सप्लाई कर रही है ये छोटी छोटी डीप वास्कुलेचर है विच आर नोन एज वेस्कुलर नर्वोस, राइट. तो ये डीप वास्कुलेचर है, राइट. ये सेंट्रल फाइबर्स विच आर द मोटर फाइबर्स उनको सप्लाई करते हैं, ठीक. ये सुपरफिशियल जो फाइबर्स पड़े हुए हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ग्रे से ये जो नजर आ रहे हैं आपको, these fibers are superficial parasympathetic fibers, right. तो जब भी कोई चीज नर्व को कंप्रेस करेगी, ठीक है, it will compress upon that nerve, that will first cause abnormality of the pupil because parasympathetic fibers they will be disturbed first. और जब भी because these fibers they are not getting their supply from these deep vasculature, ठीक है, ये जो deep vessels हैं इससे नहीं ले रहे हैं अपनी supply, they are getting their supply from the surrounding meningeal blood vessels. So ये जो superficial parasympathetics हैं they will not be involved in those, they will get involved first in those cases, ठीक है. तो जब भी कोई ऐसा कोई ट्यूमर होगा, कोई एनोरिज्म होगा, कोई ट्रॉमा होगा, तो फर्स्ट थिंग टू गेट डिस्टर्ब कंप्रेशन की वजह से दैट विल बी द सुपरफिशियल पैरासिम्पैथेटिक. और जो डीप वास्कुलेचर है वो सप्लाई करता है मोटर फाइबर्स को, वो जो लाइंग डीपर, ठीक है. तो जब इस्कीमिया होता है तो वो इन डीपर ब्लड वेसल्स का होता है, तो इट विल इन्वॉल्व द मोटर
फाइबर्स फर्स्ट, राइट। और वो मोस्टली इन मोस्ट केसेस वो जो आपका जो सुपरफिशियल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं उनको स्पेयर कर देता है। तो दैट इज व्हाई समटाइम्स व्हेन इट हैपेंस, ये अगर आप इसको अगेन गौर से देखें तो जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसको जो करता है posterior communicating artery का ये देखें, ये एनोरिज्म है, इट इज कंप्रेसिंग फर्स्ट द प्यूपलरी एरियाज, और जो थर्ड नर्व है उसके मेन फाइबर्स हैं वो दे आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब, ठीक है। और थर्ड नर्व पैल्सी विद प्यूपल स्पेयरिंग, जिसमें ये जो इनर आपका बंडल पड़ा हुआ मोटर फाइबर्स का, दिस इनर बंडल दैट विल गेट इन्वॉल्व, राइट। सो ये जो थर्ड नर्व पैल्सी ड्यू टू हाइपरटेंशन और डायबिटीज होती है, दैट इज नोन एज द मेडिकल थर्ड नर्व पैल्सी, बिकॉज उसका जो ट्रीटमेंट है दैट विल ऑलवेज बी मेडिकल। डायबिटीज और हाइपरटेंशन को सर्जन नहीं ट्रीट करता, उसको फिजिशियन ट्रीट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है एनोरिज्म, ट्यूमर, ट्रॉमा जो कंप्रेस कर रहा है, दैट इज नोन एज द सर्जिकल थर्ड नर्व पैल्सी, ठीक है। जिसको ट्रीट करना है एक न्यूरोसर्जन है, एक सर्जन है, राइट। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सर्जिकल थर्ड नर्व पैल्सी। द थर्ड नर्व पैल्सी विद pupil dilation is usually due to surgical, and third nerve palsy with pupil sparing, that is due to some medical reason like diabetes, hypertension, life threatening condition, कोई ट्यूमर है, कोई एनोरिज्म है। जबकि प्यूपल स्पेयरिंग जो होगी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग अगर बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन हुई हुई है, डायबिटीज हुई है, बट यूजुअली इट कैन बी कंट्रोल्ड विद मेडिकल रीजंस, ठीक है। सो this is just to reiterate the same thing. The pupil fibers located very superficially, which can be involved in surgical causes of third nerve palsy. On the other hand, pupil sparing third cranial nerve palsy is a hallmark of ischemic lesion that tend to involve the central core of the nerve. This is typical of non-surgical or medical third cranial nerve palsy that often results with microvascular disease and tends to resolve uneventfully within a few weeks. तो अगर आप उसकी डायबिटीज और हाइपरटेंशन कंट्रोल कर लोगे तो वो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। जबकि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, वो ट्यूमर जो कंप्रेस कर रहा है, उस ट्यूमर को जब तक निकालोगे नहीं, अनलेस इट इज रिमूव, इट विल कीप ऑन कंप्रेसिंग और भी बहुत सारी वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। एनोरिज्म्स, it may get burst, it may cause severe intracranial hemorrhage, or there is the consequences you people all know. So that is surgical, that is a life threatening. This is same again the same thing. इसमें बस ये आपको जो चीज बताने वाली है वो ये है कि ये जो आर्टरीज है, posterior communicating artery, this posterior cerebral artery and superior cerebral, इनके जो aneurysms हैं, they can affect this oculomotor nerve, ठीक है, which may cause life-threatening complications, right? It enters into the cavernous sinus, ठीक है, और ये डायग्राम आप लोगों ने देखी हुई है। इसमें ये इसके लेटरल वॉल में ये होती है, वहां पे फोर्थ नर्व भी है, उसमें फिफ्थ नर्व भी है। बॉडी ऑफ cavernous sinus में ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी हुई है, ये abducens नर्व पड़ी हुई है, ये आपके sphenoidal sinuses हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंड ये ऑफ कोर्स दिस इज द ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो it goes into the cavernous sinus and then it enters the orbit through superior orbital fissure, right? तो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, ठीक है। अब लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी है, इट मे रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन, बट यूजुअली जो इसकी ट्रीटमेंट है गो आफ्टर द कॉज। अगर इस्केमिया है तो डायबिटीज हाइपरटेंशन को ट्रीट करो, ये खुद ही ठीक हो जाएगी।
If it is due to compression, to go after that tumor or that aneurysm which is causing compression of that nerve, right? उसके बाद जो nerve है, that is the fourth cranial nerve palsy, right? ये बहुत छोटी सी nerve है. It is the only nerve which is exiting, coming out of the brain from its posterior, from its dorsal aspect. ठीक है? It has got a long course, और ये जब इस long course जब इसका है, इसका मतलब है ये vulnerable to trauma भी होगी, क्योंकि जितना लंबा कोर्स होगा उतना ज्यादा vulnerability to trauma increase हो जाती है. So it is the only nerve to arise from the dorsal aspect of the brain. So here you can see that this is the nerve, and it is arising from the dorsal aspect. This is the nerve. ये बड़ा लंबा कोर्स है, यहाँ से निकलती है इसके पूरा मिड ब्रेन के गिर्द एक चक्कर काट के तो फिर ये आगे जा रही है, right? Entering into the cavernous sinus. So it is vulnerable. So that is the most common cause जो इसकी छोटा मोटा भी head injury may cause fourth nerve paralysis. So that's how it enters the superior orbital fissure and into the orbit, and it supplies which muscle? It supplies the superior oblique muscle. करती क्या है, इसका मेन फंक्शन जो है that is basically the intorsion. तो ये एक बड़ा अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन है, मुझे मिल गई थी इंटरनेट से. तो अगर आप इसको देखें, so that is how this is functioning basically. ठीक है? ये आगे से आ रहा है मसल. It is not coming from behind, it is coming from in front of the eyeball, और बड़ी oblique insertion होती है. So that is why it causes intorsion. Main function of the, तो अगर आप इसको देखें तो this is basically the superior oblique muscle. ये ट्रॉक्लिया है, और ये आप देखें कि कितनी oblique insertion है इस मसल की. इतनी oblique जब insertion होगी तो the only thing which this muscle will cause, that will be the intorsion, right? So features इसके क्या होते हैं? डिप्लोपिया होता है, वर्टिकल एंड टॉर्शनल, वर्स ऑन डाउन के होता है. हेड टिल्ट, पेशेंट जो हेड टू कंपनसेट फॉर दैट डिप्लोपिया, पेशेंट अपने हेड को टिल्ट करता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, और देयर मे बी इप्सिलैटरल हाइपरट्रोपिया, राइट? क्योंकि इसका फंक्शन, इसने आंख को नीचे की तरफ लेके जाना है, तो अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द इंफीरियर ओब्लिक हो जाएगा. तो इंफीरियर ओब्लिक का क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन तो उसका एक्सटॉर्शन, ठीक है, आउटवर्ड टॉर्शनल मूवमेंट है, बट उसका एक फंक्शन सुपीरियरली भी लेके जाना है. तो अनअपोज्ड एक्शन जब हो जाएगा तो वो अब आंख को ऊपर की तरफ खींच देगा. So there will be limited depression in adduction. There will be extortion, and quite frequently it is a bilateral thing, right? तो इसके causes जो होते हैं, mostly it is congenital. Sometimes मैंने आपको बताया trauma, it is a common cause. Fourth nerve palsy itself is a very rare thing, लेकिन जब हो जाती है तो उसमें जो कॉमन कॉजेज आ जाते हैं, तो कंजेनिटल, ट्रॉमा, माइक्रोवास्कुलर इंफार्क्शन, ट्यूमर, कैवर्नस साइनस लीजन, एंड ऑब्वियसली न्यूरोसर्जरी के दौरान भी इट मे गेट डैमेज एंड पेशेंट मे हैव दीस सिम्पटम्स, राइट? सो अगर आप ये देखें, इस पेशेंट को देखें, सो इस पेशेंट को थर्ड राइट आई की क्रेनियल नर्व पैल्सी, ठीक है? तो जब हम इस तरह करके आई टिल्ट करते हैं, अपना हेड टिल्ट इस तरफ करते हैं, तो क्या करते हैं? आई बॉल्स जो होते हैं वो ये वाली आंख इंटॉर्ट करेगी, ये वाली आंख एक्सटॉर्ट करेगी, राइट? लेकिन जब क्रेनियल नर्व पैल्सी होगी तो ये आंख राइट आई, ये
एक्सटॉर्टेड है ऑलरेडी, क्योंकि इस आंख का इंटॉर्शन जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है, राइट, क्योंकि इस आंख का सुपीरियर ओब्लीक जो है दैट इज नॉट फंक्शनिंग, मेन इंटॉर्टर जो है वो दैट इज नॉट फंक्शनिंग, तो ये आंख एक्सटॉर्टेड हेड है उसको टिल्ट कर लेगा टुवर्ड्स द अपोजिट साइड टू कंपनसेट, तो उसको डिप्लोपिया हो रहा है और उसको कंपनसेट करने के लिए वो दूसरी तरफ अपोजिट साइड पे हेड टिल्ट करेगा, ठीक है, तो दैट विल बी दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ दिस थिंग, ठीक है, सो और वो अक्सर कंप्लेन करेगा ड्यू टू दैट हेड टिल्ट, उसके जो मसल्स नेक के मसल्स जो यूज हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, सो माय नेक हर्ट्स फॉर सम रीजन, वो क्या रीजन है, दैट इज द फोर्थ नर्व पैल्सी, राइट, सेम थिंग अगेन, इसने अब इसकी ये इसने टिल्ट किया हुआ है टुवर्ड्स द राइट साइड, तो कौन सी आंख की होगी, लेफ्ट साइड की फोर्थ नर्व पैरालिसिस होगी, सो इट इज ए कंजेनिटल थिंग, और ये फैमिलीज में भी रन करती है, अगर आप इसको देखें तो ये 4 सिबलिंग्स हैं और 4 सिबलिंग्स में सिर्फ यही एक लकी वन है, बाकी सबको देखें तो दे all are keeping their head tilted towards the left side, तो इसका मतलब है इन तीनों की congenitally right sided fourth nerve paralysis, right, ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है, इंफीरियर ओब्लीक को वीकनिंग कर सकते हैं और कॉन्ट्रालैटरल इंफीरियर रेक्टस रिसेशन कर सकते हैं, यू मे आल्सो इनकॉर्पोरेट प्रिज्म्स विद इन दी, जो अगर पेशेंट्स को अगर आप स्पेक्स दें और उसमें प्रिज्म्स इनकॉर्पोरेट कर दें तो यू मे बी एबल टू काउंटर दिस, एक नर्व रहेगी विच इज द सिक्स्थ नर्व पैरालिसिस, सिक्स्थ नर्व पैरालिसिस है, ये याद रखना दिस इज द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है, सिक्स्थ नर्व जो है पैरालिसिस दिस इज द मोस्ट कॉमन, इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पड़ा हुआ है, दैट इज लाइंग विद इन द pons, राइट, so this is the commonest cause of neurogenic squint, diplopia इसमें obviously होगा which is worse for distance, esotropia which is more for distance and on ipsilateral gaze, obviously unopposed action होगा medial rectus का क्योंकि lateral rectus paralyzed है, abducens nerve paralyzed है, so there will be esotropy, eye will be deviated inwards which is more for distance on ipsilateral gaze, ठीक है, marked limitation of abduction only. If you ask the patient to move the eye outwards, that patient will not be able to do it properly. So head turn towards the same side. So अगर उसकी ये वाली आंख जो है वो क्यों इन्वॉल्व हुई हुई है और इस आंख का सिक्स्थ नर्व पैरालिसिस है, that is the right eye, ठीक है, तो वो राइट साइड को टर्न कर लेगा टू कंपनसेट फॉर दैट डिप्लोपिया, ठीक है, इस तरह रखेगा वो अपनी आंख, ठीक है, इसमें हेड टिल्ट इस तरह या इस तरह नहीं होगा, ठीक है, देयर विल बी हेड टर्न, ठीक है, अगर लेफ्ट है तो वो ऐसे टर्न कर लेगा और अगर राइट है तो वो ऐसे टर्न कर लेगा, ठीक है, तो देयर विल बी माइक्रोवास्कुलर, मोस्ट कॉमन कॉजेज जो हैं इसके वो ही हैं, स्कीमिया, स्कीमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, माइक्रोवास्कुलर इन्फेक्शन हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो सकता है विच इज ए फॉल्स लोकलाइजिंग साइन, मैं इसकी तरफ आता हूँ, ट्रॉमा हो सकता है, डीमाइलिनेशन हो सकती है, वास्कुलाइटिस हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, जो मैं आपको बात कर रहा था हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो दी अनकस ऑफ द ब्रेन इट मे हर्निएट, ठीक है, डाउनवर्ड, जब वो नीचे डाउनवर्ड ब्रेन जाता है ड्यू टू extreme amount of high intracranial pressure, it may cause compression upon that sixth nerve on the petrous tip of the temporal bone, उसके ऊपर ये compression cause करता है, that may lead to
सिक्स नर्व पैरालिसिस। तो इसीलिए इसको फॉल्स लोकलाइजिंग साइन कहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो रहा है, साइन आपको ये मिल रहा है कि देयर इज सिक्स्थ नर्व पैरालिसिस। तो आप अगर सिक्स्थ नर्व के पीछे पड़ जाएंगे तो यू विल नॉट गेट एनीवेयर। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन द पेशेंट्स फंडस, और उसमें अगर आपको डिस्क एडीमा मिल जाता है तो गो फॉर दैट टिप, और फिर आपको पता चल जाएगा कि दैट सिक्स cranial nerve palsy is due to high intracranial pressure, right? तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिफरेंट डिजीजेस आ जाती हैं। थायराइड डिजीज है, मीडियल वॉल का फ्रैक्चर है, कन्वर्जेंस स्पैज्म है, माइस्थीनिया है। दिस कैन बी इन दी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, बट यूजुअली इट्स अ क्लियर कट डायग्नोसिस। So I will be deviated medially due to the unopposed action of the medial rectus. ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो ये प्राइमरी पोजीशन में अगर आप देखें तो सीधी है, लुकिंग लेफ्ट, इस तरफ देखें तो ये आंख इस तरफ मूव नहीं कर रही, इस तरफ देखें तो दोनों इस तरफ मूव कर रही है। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट आई का abducens nerve paralysis। और अगर आप इस आंख का ये देखें, ये हर्शबर्ग टेस्ट हो रहा है, तो दिस आई इज स्लाइटली डेविएटेड इनवर्ड्स। ठीक है, तो देयर इज esotropia and limitation of movement towards the outer side, limited abduction of it। ठीक है, same thing here। So obviously इसकी ट्रीटमेंट जो है, यू गो आफ्टर द कॉज बेसिकली एंड यू ट्राई टू ट्रीट द कॉज, राइट। जब आपको मल्टीपल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, अब आपकी थर्ड भी इन्वॉल्व है, फोर्थ भी इन्वॉल्व है, सिक्स्थ भी इन्वॉल्व है, तो कौन सी जगह है जहाँ पे ये नर्व्स इकट्ठी पड़ी? मोस्ट जो पहली चीज ज़हन में आती है आपके, वो आती है साइनस की लीजन्स में। These nerves may become involved simultaneously, right? तो थ्रोम्बोसिस हो सकती है उसके, देयर में भी एनोरिज्म्स हो सकते हैं वहाँ पे, कैरोटिड आर्टरी का एनोरिज्म हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स हो सकते हैं, मेनिंजियोमास हो सकते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो सकती हैं, क्या मतलब साइनस की जो लीजन है। फिर ऑर्बिटल एपेक्स पे ये नर्व्स इकट्ठी पड़ी हुई, तो ऑर्बिटल एपेक्स किसी वजह से इन्वॉल्व हो सकती है, उसको ऑर्बिटल एपेक्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो जस्ट टू रिवाइज द थिंग, जो थर्ड नर्व है उसके जो मेन कॉजेज हैं, वैस्कुलोपैथिक होती है, इस्केमिक, फिर ट्यूमर और एनोरिज्म, टोसिस, आउटवर्ड डिविएशन, डाउनवर्ड डिविएशन, डायलेटेड प्यूपल। प्यूपल स्पेयरिंग होगी तो प्यूपल डायलेटेड नहीं होगा, राइट। फोर ऊपर गई हुई होगी, राइट, पेशेंट विल बी head tilt towards the opposite side। ठीक है, वैस्कुलोपैथिक मेन है, ट्यूमर्स हैं, कंजेनिटल है, फिर ट्रॉमा। ठीक है, सिक्स नर्व, वैस्कुलोपैथिक, ट्यूमर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर उसमें आ जाता है। ठीक है, आई विल बी इन एक्सोट्रोपिक पोजीशन टू कंपनसेट फॉर दैट डिप्लोपिया। पेशेंट क्या करेगा कि टूवर्ड्स द सेम साइड अपना हेड टर्न कर देगा, हेड टिल्ट नहीं करेगा, राइट। और इन द एंड आई वुड से हमेशा नेवर फॉरगेट टू चेक द सेंसरी सप्लाई ऑफ द आईबॉल एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ मोटर पाल्सीज। जो अपनी सेवंथ क्रेनियल नर्व है उसको भी एग्जामिन करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑलवेज रूल आउट वेदर द डिप्लोपिया इज बाइनोकुलर और मोनोकुलर। ठीक है, बाइनोकुलर डिप्लोपिया ये होता है कि आपने एक आंख बंद की तो डिप्लोपिया डिसअपियर हो गया, राइट, और पेशेंट को फिर सिंगल नजर आना शुरू हो गया। मोनोकुलर डिप्लोपिया ये है कि आपने एक आंख बंद की और डिप्लोपिया फिर भी परसिस्ट कर रहा है। उसका मतलब है कि वो कोई ऑकुलर कॉजेज हैं, ये मसल इम्बैलेंस नहीं है, वो कैटरेक्ट हो सकता है, वो कॉर्नियल ओपेसिटीज हो सकती हैं, which may be causing this
diplopia. It is always rule out whether the diplopia is binocular or monocular, right? That's it for today. I hope कि आपको थोड़ी बहुत समझ, you can ask me. Okay, that's it for today. We will see you in few days time. आप लोग आओगे तो remember कि हम लोगों ने आपके लिए एक crash program plan किया हुआ है, तो आपको with the SOPs, proper SOPs with masks on, ठीक है? So we'll be having a crash course, जाके अब आपको एक ये जो आपका time due to this कोविड जो आपका, उसको हम किसी तरीके से कंपनसेट कर सकें और आपको जो आपको चीजें रह गई हैं वो करा सकें, ठीक है? तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट इंशाल्लाह, ठीक है? सो बी सेफ. At your home is safe condition. आओ जल्दी, खुदा हाफिज.